Hello. Yeah, hi guys. I'm audible. Yes, sir. Okay. Yeah, let's wait like couple of minutes for others to join and then let's start this session. Okay. Let's start at 10:06. Yes. Okay. Yeah, let's start with today's session. So yeah, guys, please let me know any doubts you have. How is the preparation going? Are you able to do the questions on the concept we have talked so far? Like if else loops, any doubts, any problems you guys have? You can please unmute yourself and let Sir, me know of the issues that you are facing. Yeah. Hi, buddy. hi, Kunal here. So if you use Yeah. continue in the loop, so whatever inside that loop will not affect, no? Outside the if we come outside the loop, it will affect Uh-huh. the whatever the print. See, you are like talking about continue, right? The basic functionality of continue is to skip the like further statements in that iteration of the loop, right? So Okay. that's the like the functionality of continue. If you talk about break, it breaks the execution of the entire loop any further, right? Continue works on a single iteration, whereas break works at the entire loop, right? It stops the execution of the entire loop. Okay. Okay. Yeah. Hello, sir. Yeah. Hi. Sir, what is inbuilt function math dot max? Okay, so maths.max is the inbuilt function, like we talked about it yesterday. It's basically the input function that helps you find the maximum of the two values, right? You can have two values, A and B. The math.maximum function will be returning the maximum amongst them, right? Let's say A is 3 and B is 5, right? So if you Yeah. write math.maximum A comma B in the brackets, so you will be getting the maximum value amongst these. So which one is the maximum? I can say B is the maximum with the value of 5, right? So it's an inbuilt function that will be returning 5 to you. Okay. Okay. So Okay, sir. math dot max is comparing only two numbers, or it will compare whole the array if you use. Okay. It won't compare, I guess, the whole array. It's basically two variables, right? Like you can like chain it to basically compare more variables, right? सर Okay. एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए इंपोर्ट फंक्शन को इंपोर्ट कैसे करते हैं कुछ भी इंपोर्ट करना हो या फिर ओके इंपोर्ट आप देखोगे आंखों के एक सेकंड इंपोर्ट फंक्शन बेसिकली ना यूटिलिटीज को इंपोर्ट करने के लिए होता है लाइक हम जावा में भी यूटिलिटीज इंपोर्ट करते हैं राइट आप ओके किसी भी सर कोड प्रॉब्लम को खोलोगे उस प्रॉब्लम के ऊपर टॉप पे अगर आप देखोगे ना तो उस प्रॉब्लम के टॉप पे आपको तीन इंपोर्ट स्टेटमेंट्स दिखेंगी राइट दैट इज जावा डॉट यूटिलिटी लावा डॉट लैंग्वेज एंड आईओ सो तीन पैकेजेस हैं जो हम मतलब बेसिकली यूज करते हैं आईओ सर इनपुट व्हाट इज आउटपुट के लिए डिफरेंस होता इन है सर इन हाँ तीनों में क्या डिफरेंस है इन तीनों में डिफरेंस क्या है इन्हें ही क्यों यूज करते हैं देखो इन तीनों को यूज करना भी जरूरी नहीं है बस पता है क्या होता है देखो जब भी हम कोड लिखते हैं ना तो कोड लिखते समय हम सारा कुछ एक फाइल में नहीं लिखते एक फाइल में लिखते हैं तो मेंटेनेबिलिटी कम हो जाती है हम उसको मॉड्यूलर चंक्स में डिवाइड करते हैं चंक्स में डिवाइड करने से क्या होता है कि हमने एक जगह पे एक कोड लिख दिया उसको हम ना हर बार अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं राइट फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि वी यूज math.maximum in our function right we directly use it
we are not like defining that function, right? So how are we able to do it? We are like basically importing the functionalities that are separately written in any module, right? Basically in the utility or the language module, I'm not sure about it, right? So उससे क्या होता है कि वहां पे आपने लिखा हुआ है उसकी functionality, right? You are like simply importing it and like using it, right? So you are not like concerned with the internal functionality, you are just like concerned with the how to use it in a better way to basically optimize your system, right? So इससे imports का यही फायदा होता है कि आपको सारा कुछ एक जगह नहीं लिखना होता, कुछ प्री रिटन फाइल्स हैं, कुछ प्री रिटन हैंडलर्स हैं, राइट? लेट्स से फॉर एग्जांपल sc.nextint, right? So sc.nextint basically helps you to get an input from the console, right? Okay, so how are you getting the input from the console, right? Basically there is some sort of an like code written for it that is pre-written by the Java. सर जय, जिन्होंने जावा बनाया था उन्होंने जावा के लिए प्री रिटन कोड लिख दिया था कि इस तरीके से हम इनपुट लेंगे, इस तरीके से ये सब होगा, राइट? So we are just Okay. concerned with using the APIs that are provided to us, right? So we are not like concerned with the actual implementation. So that's the use of input, right? सर एक बार स्क्रीन शेयर करके आप डिटेल में समझा सकते हैं कि ब्लैंक स्क्रीन हो हमारे पास, उसको कैसे कैसे लिखना होगा, क्या फंक्शन डालेंगे स्टार्टिंग में? और सर एक दिक्कत ये भी आती है, जैसे मैं VS कोड पे कोड कर रहा हूँ तो जो हम इंडेक्स मतलब मेन डॉट जेएस करके कोई फाइल बनाते हैं तो उसके अंदर मेन फंक्शन ही इनबिल्ट कुछ इस तरीके से main.js तो जावास्क्रिप्ट हो गया ना? जावास्क्रिप्ट मेन डॉट जावा के नाम से कोई फाइल बनाऊंगा तो मतलब फाइल के अंदर भी मेन ही डिक्लेयर करना पड़ेगा? Yes, function में the parent class that you are like going to use will be named as what is the file name, right? अगर आपने file name main.js बनाई है तो आपको अंदर function का भी जो होगा ना wrapper function, वो आपको main.js ही बनाना पड़ेगा, right? सर आपके पास VS कोड होगा? VS कोड होगा, पर VS कोड में मेरे जावा सेटअप नहीं है, राइट? तो मैं आपको अभी दिखा नहीं पाऊंगा। ओके सर, तो सर एक ब्लैंक स्क्रीन पे आप ये सब चीजें एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं, ब्लैंक स्क्रीन पे लेकर वन मोर? ओके, सो ब्लैंक स्क्रीन सर जावा की जैसे ब्लैंक स्क्रीन से इंपोर्ट अब दोबारा लगाए, जैसे कि इनबिल्ट नहीं लगाना, इनबिल्ट फंक्शन में तो इसमें तो खुद ही आ जाते हैं जैसे, तो ये इंपोर्ट खुद लिखना, फंक्शन खुद लिखना, ये सब चीजें। तो एक काम करते हैं, इसको ना एंड में लेते हैं, राइट? तो इसमें ना टाइम लगेगा, तो पहले बाकी बच्चों के डाउट्स एक बार रैप कर लेते हैं, फिर आपको एंड में करा, ठीक है? स्पेशली सर। ओके सर। या सर अगर अपन ब्रेक यूज करते हैं लूप के अंदर, लूप में तो सर वो जितने भी लूप कंटिन्यू चल रहे हैं सबसे ब्रेक हो जाएगा या केवल तो एक लूप? नहीं, वो सिर्फ अपने नियरेस्ट पैरेंट को इफेक्ट करेगा, राइट? सो लेट्स से कि इफ यू आर लाइक यूजिंग अ नेस्टेड काइंड ऑफ पैटर्न, राइट? लूप इनसाइड लूप. So if you are like using break in the nested loop, so it will just affect the nested loop, right? It won't affect the entire, it won't affect the main loop, right? The nearest parent loop that is like is executed, right, is affected, okay? And in continue it's also same. Yeah, it's in continue it's also same, right? The nearest parent will get affected, right? Okay, sir. Okay, so Bobby, you are asking about largest number at least twice over there. Yeah, buddy, we have covered this like in the dark class, right? Yeah. Hello, who's it? sir. Yeah. Yes, sir. Actually, I'm having problem converting int to long. When I'm writing like long A is equal to any number or any number that is to be input by the user itself, but the answer is not coming correct. And if I'm writing like capital long, then there is an error showing that int cannot be converted to long. Okay, see, in like for direct conversion, see, इसमें क्या होता है ना, like typecasting होती है. Typecasting is the concept in which you basically are able to, देखो, let's talk about the scope, right? Int has a specific scope of 2 to the power of 32, right? 2 to the power of 32 because it's a 32-bit integer, or 4 bytes, you can say. 4 bytes, 32 bits, so 2 to the power 32, right? Now long is an 8 byte. So 8 byte, I guess 8 into 8 is 64. So it's a 2 to the power 64, right? So you can see the main first difference is ki integer is having smaller scope, right? The space as compared to long, right?
अच्छा चलो मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। एक सेकंड। Okay, so yeah, please let me know if the screen is visible. Yes, it is visible. Okay, so see, इंटीजर में आपका क्वेश्चन है कि आप बेसिकली कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, राइट? Yes, sir. Okay, so I guess कि let's say कि एक सेकंड। तो पहली बात तो ये कि अगर आप इंटीजर को लॉन्ग में करना चाह रहे हो कि लॉन्ग को इंट में करना चाह रहे हो? मतलब मैं मतलब स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया कि लॉन्ग n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लॉन्ग लाइक मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया ये, क्योंकि एंड में फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में ये सब कुछ लॉन्ग से ही स्टार्ट करा, इंट लिखा ही नहीं है, बट स्टिल वो जो आंसर है वो लाइक आ नहीं पा रहा है पूरा। आपने लॉन्ग sc डॉट नेक्स्ट लॉन्ग करा ना स्कैन से? हाँ हाँ। तो उसके बाद क्या नहीं आ पा रहा? उसके बाद लाइक जो आंसर है वो लाइक पूरा पास नहीं हो रहा है। जैसे कि एक क्वेश्चन है वो बाइनरी कंफ्यूजन वाला, उसमें मेरा लाइक उसमें मेरे 2 टेस्ट केस फेल हो रहे हैं। तो लाइक मैंने ट्राई करके देखा तो मेरे को तो यही समझ आया कि मतलब शायद लॉन्ग का ही दिक्कत होगा, क्योंकि सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं और सिर्फ 2 फेल हो रहे हैं। सिमिलर मेरे को यही इशू आया था, एक वो आशुतोष विद दिस पॉइंट्स ये वाला क्वेश्चन था, उसमें भी मेरे को सेम इशू आया। अच्छा, इसमें ना आई गेस एक बार आपका इशू देखना पड़ेगा, क्योंकि इशू में पता है क्या होता है कि हो सकता है आपकी एल्गोरिथम करेक्ट है, सब करेक्ट है, बट उसको ना टाइम लिमिट आउट हो रही हो, तभी हो सकता है तब भी 2 क्वेश्चन मतलब 2 टेस्ट केस फंस रहे हो, राइट? तो ये भी हो सकता है कि लॉन्ग की दिक्कत हो, ये भी हो सकता है कि टाइम लिमिट एग्जीक्यूट वो हो रही हो। अब जैसे आप मानो लेट्स से एक क्वेश्चन होता है सर्च नंबर, राइट? अब सर्च नंबर के लिए भी हमारे पास काफी तरीके होते हैं। लेट्स से अभी आपको जो जनरली सीखोगे तो वो ओएफएन में करोगे, राइट? आप बोलोगे कि सर मेरा कोड सही है। अच्छा, ओएफएन भी नहीं आपको पता होगा ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, मतलब टाइम बाउंड्स होते हैं, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं जिसके कारण लेकिन ये मेरे को एक्चुअल में थोड़ा बहुत पता है, लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) हाँ O(1) एंड स्क्वायर। हाँ, तो वही है कि ओएफएन मतलब आप एन ऑपरेशंस कर रहे हो, लाइक बेसिकली तो क्या होता है, आपका अगर टेस्ट केस 1 या 2 फंस रहे हैं ना, तो मतलब जनरली यही होता है कि आपका कोड सही है, बट या तो कॉर्नर केस हैंडल नहीं हो रहा, या फिर वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आउट ऑफ बाउंड जा रही है, राइट? तो इट्स नॉट जनरली कि आपके सिंटैक्स में कोई एरर है, राइट? हो सकता है टाइम बाउंड हो रहा है, राइट? तो वो तो राइट, वो एक बार देखना पड़ेगा। आप एक काम करना, आप थोड़ी देर में ना मेरे को लाइक एंड में क्वेश्चन शेयर कर देना, राइट? तो फिर हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। Yeah, और guys, लाइक anybody else has doubt? Yeah, सर वो please. एक और वो क्वेश्चन था, वो लास्ट 2 डिजिट फिबोनाची वाला। तो उसमें लाइक जो मैंने एल्गोरिथम लिखा है उसमें बस फिबोनाची सीक्वेंस प्रिंट करना था, और लेकिन जो इसका लास्ट डिजिट है सिर्फ वही लास्ट 2 डिजिट्स को प्रिंट करना है। तो वो ये जो मेरा एल्गोरिथम वो 100 तक, अगर n इज इक्वल टू 100 तब तक तो काम कर रहा है, लेकिन 100 के बाद से आंसर ही गलत आ रहा है। तो लाइक हाँ, एल्गोरिथम में प्रॉब्लम कैसे है फिर, अगर आंसर गलत ही आ रहा है? इसमें एल्गोरिदम में प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अगर आप लेट्स से फिबोनाची 100 का नंबर देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट आई गेस कि आउट ऑफ बाउंड जा रहा होगा इंट के, राइट? तो इफ लेट्स से कि फिब आउट 100 ऑफ क्या, बाउंडिंग मतलब इसका आंसर ही गलत आ रहा है, लाइक जो मैंने लगाया है 100 से पहले आंसर सही है, बट उसके बाद हाँ आंसर ही गलत आ रहा है। लाइक मैंने चेक करके देखा था तो बिल्कुल गलत आ हाँ, रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि पता है क्या होता है कि जैसे ही वैल्यूज आउट ऑफ बाउंड जाती है ना, तो फिर वो रिपीट होनी शुरू हो जाती है, लाइक मॉडुलस ऑपरेटर लगने लग जाता है, राइट? तो वो कैप हो जाती है इंटीजर के अंदर, ठीक है? ओके। तो उससे क्या होगा, आपकी एल्गोरिथम, जैसे मैंने कहा ना कि एल्गोरिथम तो सही होगी, आउट ऑफ बाउंड हो रही होगी उसके, मतलब ये देखो, अगर आप फिबोनाची नंबर को भी देखोगे ना कि 100 फिबोनाची नंबर क्या होता है, तो ये होता है भाई, ये होता है फिबोनाची नंबर 100, राइट? तो कितना बड़ा नंबर है, राइट? तो हो सकता है कि इसके कारण ये जो इंटीजर के आउट ऑफ बाउंड जा रहा हो, ठीक है? तो उससे क्या होगा, उसके बाद वो फिर से शुरू हो जाएगा, राइट? मॉडुलस आ जाएंगे, अलग अलग ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। तो वो क्या करता है, कंपाइलर ना इंटरनली एरर हैंडलिंग करता है ताकि आपका कोड ना फटे,
राइट, वो चलता रहे स्मूथली, बट आउटपुट डिफर होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो आई गेस जनरली इतना बड़ा नंबर तो होना ही नहीं चाहिए, लाइक 100 तक। मतलब आपने हार्ड कोड चेक करा था या टेस्ट केस ही 100 तक था, नहीं, क्या था इसमें? टेस्ट केस भी 255 है एक तो। 255 है, हाँ, तो इसमें फिर आपको लॉन्ग, लाइक लॉन्ग लेना पड़ेगा। लॉन्ग मैंने किया था, फिर वही नहीं हो रहा था, लाइक सेम आंसर आ रहा था लॉन्ग देके। और सर क्या स्मॉल लॉन्ग और लाइक कैपिटल एल और स्मॉल एन ओ एन जी, लाइक उसमें क्या डिफरेंस है? मैंने कैपिटल वाले तो आई गेस यूज नहीं करेंगे, वही है, स्मॉल लॉन्ग ही होता है, कैपिटल तो नहीं होता, ओके। राइट। हाँ, अगर आप लॉन्ग की भी लिमिट देखोगे तो ये होती है यार, पॉजिटिव में, राइट। तो इसमें देख लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 8 6, ये नंबर तो लॉन्ग में भी नहीं फिट आएगा, राइट। तो इसमें ना आई गेस जावा के अंदर ना एक वो होती है कि बिग इंटीजर करके एक वो होती है, फाइल होती है, उसका यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसकी अभी टेंशन मत लो, इतना इतना हार्ड कोड अभी आपको नहीं कराएगा, राइट। ये आप टाइम के साथ मतलब सीख जाओगे। सर इसमें ये यूज नहीं कर सकते, लॉन्ग 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 2 बार लिख सकते हैं जैसे सी प्लस में करते हैं? राइट, हाँ मैं वही देख रहा हूँ यार, अगर मैं तुम्हें सही बताऊँ ना, तो मैं भी सी प्लस प्लस कोडर हूँ, मैं जावा कोडर नहीं हूँ, राइट। तो दिक्कत यही है कि मतलब हमारे में सी प्लस प्लस में तो लॉन्ग लॉन्ग हो जाता है, पर जावा में आई गेस लॉन्ग लॉन्ग नहीं होता, तो इसमें सिर्फ लॉन्ग ही है, ओके राइट। सर। इसमें बिग इंटीजर वाली एक फाइल होती है, यस सर, राइट। क्योंकि सी प्लस प्लस में तो लॉन्ग लॉन्ग हम 2 बार लिखते हैं तो उसकी लिमिट हाँ, दुगनी हो जाती है। यस, तो वो लॉन्ग लॉन्ग से तो वो तो फिर वो हो जाता है, राइट, वो 128 बाइट्स होती है, राइट। ओके सर। तो हाँ, मतलब कोई बात नहीं, देखो कॉन्सेप्ट सही है ना, तो वो तो बाकी बातें तो आप सिर्फ एल ही लास्ट में लिखते हैं। हाँ हाँ, इसमें जावा में होता है कि आपको अगर लॉन्ग इनपुट लेना, तो लॉन्ग मतलब अगर आप लॉन्ग डिक्लेयर कर रहे हो ना, तो 100 के बाद उसको एल से यूज करते हैं, राइट। इनपुट में तो आप नेक्स्ट लॉन्ग ले लोगे तो चल जाएगा। हेलो, यस। या एनी अदर डाउट अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक कोई प्रॉब्लम में स्पेसिफिक डाउट है? पिरामिड प्रोग्राम, स्टेयरकेस, पिरामिड प्रोग्राम अगर इसका लिंक दे दो तो डिस्कस कर पाएंगे, लाइक कोई मतलब अभी तक असाइनमेंट में जो है उसमें कोई दिक्कत है? स्पेसिफिक डाउट्स तो यार एंड में ले लेंगे, असाइनमेंट में किसी को किसी प्रॉब्लम में दिक्कत है अभी तक? नो सर। राइट, Hello, या या sir. Sorry, sir. Come again. Just now I joined. I don't know what's going on here and what was that assignment. Okay, so So could you yeah, please today's tell class me? is yeah, I basically arranged today's class, right? We are done with the loops assignment, right? So I really thought ki we have covered so far like 2 concepts, right? So I really wanted to take your personal doubts ki so far what we have covered, are you guys facing any sort of issues before like moving further? Let's make sure ki yaar jo abhi tak padha hai that is clear with you guys, right? Okay. Yeah, okay, sir. Thanks. So yeah, any doubts that you have as of now from the any assignment questions that we have covered so far? Yes, sir. Yeah. Sir, I have sent you a link. Okay. Who's this? तो तुम्हारा डाउट है लार्जेस्ट नंबर में, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, लार्जेस्ट नंबर जब सर हम करते हैं ना, लार्जेस्ट नंबर सर बनाना है सर, कैसे बनाएंगे? हाँ, मैं आपको पहले Yes, sir. बता दूं, ये अभी आपसे Okay. नहीं होगा, राइट। लार्जेस्ट नंबर सर में सॉर्टिंग असाइनमेंट में लगती दे है। रखा है सर। कौन सी असाइनमेंट है, किस चीज की असाइनमेंट है? आप मेरे को नाम बताओ, मैं इसको रिपोर्ट कर दे। ये अभी आपसे नहीं होगा क्योंकि इसमें लगती है इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम, आपने अभी तक सॉर्टिंग नहीं पढ़ी है, राइट। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये अभी तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए या तो आपको कंपैरेटर्स पता होने चाहिए या आपको इंसर्शन सर सॉर्ट के एल्गोरिथम। एरे के असाइनमेंट में दे रखा है, एरेस के असाइनमेंट में। अच्छा ठीक है, तो आप ना ठीक है, मैं ये एक बार इंटरनल टीम को बता देता हूँ कि ये चीज हटानी पड़ेगी, राइट। एरेज में ये होना नहीं चाहिए, ओके सर। ठीक है। सॉरी सर, एरे तो आज ही से स्टार्ट हुआ है ना, एरे का टॉपिक आज से हाँ स्टार्ट हाँ, हुआ है, क्या पता नेक्स्ट कल या परसों में हमें बता दें। असाइनमेंट नहीं, तो 2 सर 3 दिन सॉर्टिंग चलेंगे। सॉर्टिंग थोड़ी ना बता देंगे। हाँ वही तो बात है ना, ये सॉर्टिंग थोड़ी आप कर लोगे, सॉर्टिंग तो एंड में आएगा, राइट। ये क्वेश्चन एरे का है,
एरे डेटा स्ट्रक्चर है, पर जो एल्गोरिदम लगेगी इसमें वो सॉर्टिंग की लगेगी। ओके या सो Sir, reverse उसके लिए अभी numbers आपको को पहले सॉर्टिंग के लिए वेट करना होगा, राइट? आई गेस तो- अदर्स विल, ओके सर। या सर sir, दूसरा वाला लिंक reverse है ना number उसका क्लिक वाला करो सर। problem प्लीज वन एट अ टाइम, राइट? प्लीज वन, या मनबोध विक्रम शाह, या यू कैन sir, reverse number वाला को एक बार समझा दीजिए। Sir, ओके, या सर वन मोर sir, क्वेश्चन। in sorry, sir, in largest number, I have one doubt. In the end of the code, we use if loop, if condition. In the if condition, we give 2 into array I greater than array idx. What does that mean, sir? I mean, how to calculate that if condition? Okay, all right. So let's have a look at your problem, right? Okay. Yeah. Next problem we will be looking at reverse number, right? My output is okay. So yeah, Yeah. let me just Sir, stop my. reverse number। हाँ, एक second. Reverse number देख रहे हैं. Okay. So yeah, क्या दिख रहा है आपको अभी स्क्रीन पे? I guess पोर्टल दिख रहा है ना आपको? Yes। तो यस सर। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये अभी चलेगी आपकी सॉर्टिंग से, तो इसको अभी रहने दो, इसमें टेंशन मत लो, सॉर्टिंग हो जाएगी फिर ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, व्हाट वाज योर लाइक क्वेश्चन, हु सेड अबाउट ज्योति, आई गेस? Yeah, here, Jyotirmay, largest number. Just give me a What I'm second. asking, okay. Okay, so largest, it's in loops, right? So largest number at least twice of the others, right? Okay, yeah. So which if condition you are like talking about? This one, line 25. सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, जेड कोड की साइड दिख रही है। लीड कोड की साइड दिख रही है? Yeah, it shows same page. It doesn't. Okay, yeah, just give me a second. Okay, so yeah, अभी दिखी? यस यस सर। सर, नॉट विजिबल। Oh, yeah, I Yeah, guess sir. I'm asking last 23, 24, 25. 23, 24, 25. Okay, so you know about the rule of negation, right? If we are like trying to prove something, rather than like finding the actual answer, if we are able to like neglect the answer, that's also a valid solution, right? Okay, so let's say in this problem, I'm tasked to tasked to check basically the largest number is greater than the twice of every other number, right? So Yes. there are two ways to basically validate the answer, right? Either I check with every number, like, and at the end I evaluate okay, so every number was so the largest number was greater than the every other number or not, right? So yeah, please guys keep yourself on mute. Yeah. So there is the first way I can either check it with every number, or I can find that exact number on which the statement is invalid, right? So that basically makes the answer as false, right? अगर हमें बताना है कि कोई चीज सही है, तो यहाँ तो हम सारा देख करके बताएंगे हाँ सही है, यहाँ तो फिर हम वो वजह ढूंढ ले जिस वजह के कारण वो सही नहीं है, right? So like we can solve it in two ways. So see, what is happening here is कि basically first I found out what is the largest element at which index it is present, right? After that, I'm basically using a for loop to validate ki is it greater than the twice of every other number, right? I'm not like going through the entire array. I'm like stopping my search as soon as I find the first invalid case, right? Where the element exceeds, right? So if any number twice is greater than the largest number, okay, so I know that the entire statement will now be false. So as soon as I find that, I basically make the idx -1 by -1, because you can see the print. Okay, so if there is satisfies the answer, we need to print the index, else we need to print -1. So it's an invalid case, so we are printing -1. And as soon as I find an invalid case, I need not to look any further. I can simply break.
Okay, so this is how the next for loop is working. Sir, actually, I Uh-huh. didn't get again here. Like you are on mute Sir, again. yeah. Sir, here Yeah. 2 into array I greater than array. What does the exact mean array I greater than array is? Because already we mentioned in before for loop idx is equal to I compare. It means it is the largest number we compare to the. Okay, so I guess you are basically confused between the line 25 and line 26, right? Yeah. Okay, so what does line 25 means by your understanding? What is It happening in means this? yeah, if I double equal to idx means here for suppose I is equal to 0, it double means idx. We already get a largest number in 20th line. We compare to that largest number. Okay, If it is equal, first thing is कि idx is not the largest element itself, is the index of that largest element, right? You can see I mean the idx index is of the the index. largest. Yeah. Okay. Yeah, index of the largest element. सर एक बार क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अच्छा देखो, अगर इसको हिंदी में बोलूँ ना तो हिंदी में इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें एक एरे गिवन है, हमें उस एरे में वैलिडेट करना है कि उस एरे में जो सबसे बड़ा नंबर है ना वो बाकी सारे नंबरों के दुगने से भी बड़ा है. ठीक है, बस इतना सा प्रॉब्लम है. अगर तो ये स्टेटमेंट वैलिड है तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट था उसका इंडेक्स प्रिंट करा देना, नहीं अगर वैलिड नहीं है ठीक है तो -1 प्रिंट करा देना. सिंपल. सर इसमें कहने का मतलब ये है कि जो एरे में नंबर्स हैं वो तो ऑल एलिमेंट्स है ना के दुगने से ही बड़ा है, कि उनको दुगना भी कर देंगे ना फिर भी वो बड़ा है. हाँ, जो एरे का सबसे बड़ा नंबर है, राइट, अगर एरे में 1 2 3 4 5 है तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया 5. तो हमें ये चेक करना है कि जो सबसे बड़ा नंबर है 5 वो बाकी सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 के दुगने से भी बड़ा है, राइट. तो हमें नो ये सर. करना है. फिर सर जैसे वो तो वही हो. हाँ बोलो. सैंपल आउटपुट में दे रखा है 4 3 6 1 0, तो आउटपुट में ओनली हाँ, 1 दे रखा है, तो कैसे? इसमें 1 दे रखा है. इसमें 1 क्यों दे रखा है, मैं भी ये सोच रहा हूँ. लार्जेस्ट नंबर फॉर अदर एवरी अदर नंबर x is the. 4 है ना, n है सर 4. अच्छा हाँ 4n है, राइट, सॉरी. तो 4n था तो 6 की लोकेशन 1 होगी ना, 0 1 2 3, राइट. तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में तो 0 से चला तो 6 की लोकेशन 1 है. अब तुम खुद देख लो बाकी सारे एलिमेंट्स. लेट्स टॉक अबाउट 3. सो 6 इज ग्रेट. 6 की लोकेशन तो 2 है ना सर? 1 है. नहीं सर, 0 मतलब 4 को इंडिकेट करेगा, 1 नहीं 3 को इंडिकेट 4. करेगा. अरे वो 4 is basically the number of elements in that array, right? You can see we are ओके, taking the या n as the input, right? तो ओके वो ओके continuous pattern में inputs हैं, but उन inputs का meaning अलग है, right? So that's why we are ठीक है. getting 1 here, right? Yeah. Yeah, Jyoti, where were we? Right. So you were explaining Yeah. कि yeah, this if statement basically means कि don't check for the number that is the largest itself, right? Let's talk about the sample input, right? You know कि 3 6 1 0 are my inputs. Now what will be the index of the largest element? 1 it will be, right? 1. Now if I is standing at 1, that basically means कि I'm checking 6 with 6. Does that make sense? कि I'm like checking the twice of the largest number and like trying to validate it? No, because twice of the largest number will surely be greater than the largest number itself, right? So just to prevent that from happening, I'm basically using the continue, right? As I explained, the continue basically prevents the any further execution of that iteration, right? So when I was 1, I will be 1. It will be like validated with IDX, right? 6 indexes 1 and 1. So yeah, the continue statement will prevent any further execution, right? So if like from line 26 to 29 won't be executed, next iteration will take place, right? That is for I is equals to 2. Okay. Okay, sir. मतलब सर कंटिन्यू अगर नहीं करते हैं तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी. मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बचेगी, आपका आपका आंसर गलत आ जाएगा. देखो आप खुद देखो, हमें चेक करने की हर नंबर से लाइक वो बड़ा है कि नहीं बड़ा है, राइट? तो अगर मान लो मेरा सबसे बड़ा नंबर ही 6 है तो 6 का दुगना करा 12 तो 6 से ऑब्वियसली बड़ा है ना, तो वो तो इनवैलिडेट हो ही जाएगा. मेरे को वो केस प्रिवेंट करना कि मैं खुद से ना चेक कर लूं, यार मेरा खुद का दुगना तो मेरे से तो बड़ा ही है ना, ऑब्वियसली. Yeah, so that's why we are like writing it in this way, right? सर लाइन नंबर 19 and 20. Sir, Yeah. sir,
here we have to compare for every other number in the array of x6 is, I mean, at least twice as big as s. But where did we compare to that numbers? If it is, for suppose you tell me that if 1 double equal to 1, so it should stop there and print 6 here. I mean 1. No, it should not stop. It should like basically continue the checks, right? So I guess you guys will be needing a dry run of this, right? It will be better if I like show you with the actual example. Sorry, guys. Okay, so let's have a look at it on the notepad, right? See क्या होगा? Okay, यार ये कोड कौन स्पैम कर रहा है? शशि रुक जा यार भाई, देखते हैं अभी. Okay, so yeah, guys. Let's say the problem is कि we need to find the index, right? Find the index, right? The keyword is index पे काम करना, right? Index of the largest number if it is greater than, right, then every other number, right? Greater than 2 star of every other number, right? So let's talk about integer. Let's talk about the array, right? So let's say the n initially is given as let's say ki 6 ले लेते हैं, right? Now the array elements are ARR. Okay, let's say 0, 3, 2, 4, 9 and 1, right? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Yeah. So let's also write their indexes now, right? So 0 is at index 0. This is at index 1, 2, 3, 4 and 5, right? So this is indexes. Right. Now you can see we had a condition, right? Key, let's say first, okay, so everybody is comfortable with the first for loop, right? If I like bring the code, yeah, just give me a second. Let's see. Yes, sir. Okay, so yeah. Okay, so you guys can see this is the given array, right? Now I believe you guys are comfortable with this part, right? From here, this index to this breakpoint. Any doubts in between these lines? Any doubts? No, sir. Okay, so what is happening in these lines? Anybody answer me? If you guys don't have any doubt, what is happening? We find the largest number of index. Yeah, we are finding the index of the largest element, right? Okay, someone asked about these two lines. Key, what is happening in this if and IDX? So basically, we are maintaining the index of the largest element, right? IDX is the index of the largest element. We are comparing it with every element, right? If the element is greater, we are basically assigning that index to the IDX. So that we have found a new index, right? I hope that is clear. Now, let's talk about the second for loop. Okay, let's talk about the second for loop. The second for loop is this, right? This part. Now, in this part, what is happening? Let's do a dry run, right? So what will be the IDX value in the above array? What will be the IDX value in the above array? 4. Yes, it will be 4. Why 4? Because the largest element is Largest number. 9, right? Now, please see what will happen to I. Let's do this. Okay, let's take I. What will be the initial value of I? Okay, let's keep the answer also. Right, answer initially was -1, right? Right, or the IDX, right? Let's say कि IDX को ही हमने answer की तरह use कर दिया तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, right? So why we are having IDX? Because we need to print the index, right? You can see index. Now let's do the dry run. Okay, so first line of the for loop is executed. It basically checked, is this index, that is index 0, is it equal to IDX? I can say no. So basically the next line will continue. Okay, so is the twice of the array at I? What is array at I? Array at I is 0. What is the twice of array at I? It's 2 into 0, still 0.
is this number now greater than what is at array at IDX? Right. Let's mark array at IDX. Okay. Blue is IDX. Right. Now, is this statement true? Is 2x0 greater than, let's say, 9? Is this true? I can say no, it's not true. So basically the internal, let's say internal lines won't be executed. Okay, what will happen? There is nothing further to execute or basically check. So yeah, the iteration will continue. I will change its value to 1. The arrow will move, right? The arrow will move. Now, what is the first statement that will be executed? It's this one, right? This is the first statement that will be executed. Is I equal to IDX? Is it true? No, it's not true, because I is 1 and IDX is 4. So again, the next line can proceed, right? Continuous statement won't be executed. Okay, because this is not a valid case, right? So continue will be executed. So I can say 2x array at I. What is at array at I? I can say 3 is at array at I. Array of I, right? So 2, 3. Is it greater than the IDX array at IDX? What is at array at IDX? It's 9. Is this statement true? I can say no, 6 is not greater than 9. So yeah, the internal conditions won't be executed, right? Lines won't be executed. For loop will continue. Let's make it 2. Okay, let's make it 2. Now, again, what is the story? I can say IDX is not equal to I. So 2 into what is at IDX of array at 2? Array at I, sorry. Array at I is 2. So is 2 into 2 greater than 9? Again, the same story. No, it's not. Right. Please continue with the for loop. Right. Let's go with 3. This will happen. Right. Now, is I equal to IDX? No, I is currently at 3. IDX is 4. It's not equal. Right. So we can like continue with the second if check. What is second if check looking at? 2 into array at I. What's that array at I? 4. Right. Is it greater than 9? Is it? No. 8 is not greater than 9. So yeah, again, same story. Don't execute anything. Right. Continue with the for loop. Now, this is the part where you guys are like getting confused. Right. Now, I is equal to IDX. Right. So if I is equal to IDX, does it makes any sense to basically check 2 into 9 greater than 9? Does it make any sense? I can say no, it doesn't make any sense, because we are tasked to ask like check for every other number, right? We are tasked to check for every other number that is apart from the greatest number. So 9 is itself a greatest number in the given array. So anything multiplied with it will be getting me a much higher result. So this will basically validate. Let's say if I didn't had the I is equals to IDX wali part, see what will happen is, okay, so it will be a valid case, right? IDX will become -1 and it will simply break. So what will my answer be printed? The -1. We didn't find the correct answer, right? We got the answer as -1. But what should be the ideal answer? The ideal answer should be 4, because 9 is greater than the other number. So that's why to prevent this kind of scenario, right, we are having the first if check. Got it? Sir, it means our output is 4, right, sir? Yes. 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 See, okay. We are having the IDX as the index of the largest element, right? Okay, so if I find the any first invalid case, I'm basically using the IDX to invalidate, right? You can see I'm making the index as -1, I'm breaking out, right? So that after that also I'm basically printing the index, but this time index value is changed, right? It will be of -1. Let's have a look. Right, just be with me for once. Okay, so I can say for I is equals to 4 only, first if check will be executed. After that, no further execution will be taking place. What will happen is it's a continuous statement, so the for loop will not break. It will just like skip this further execution, right? So what will happen is I will be made 5, right? So the pointer will just move. You can see loop is still working, but the statements just got skipped, right? So let's say is IDX is equals to I? No, it's 5. So we basically are not at the largest element, right? Okay, so 1 into 2 is greater than 9? No, it's not. So simply the IDX stayed the index of the largest element itself. You can see the for loop has ended now.
right? Because after this, I will be turned to 6. Now this is out of range of n, right? N is 6, right? It's equal to n. It's not smaller than. So for loop will stop its execution. Simply the printing of IDX that makes the answer as 4. Got Okay, it? sir. Sir, yeah, got it, sir. Could you please try if -1 output is Yeah, equal to -1? let's do that. Okay, so let's make this as 10, right? Let's make it 10. Let's continue the story from this. I is equals to 4. Does that sound good? Right? Or let's let's not keep it 10 because फिर वो largest number भी 10 हो जाएगा. So let's make it let's say 9 to 7. Yeah, 9 ही रख लेते हैं ना. आपको duplicate case भी समझ आ जाएगा. देखो, let's say what will be the IDX be in this case? Like let's do the IDX. What will be the IDX in this case? In the given array, what will be the value of IDX? -1. ना आंसर मत बताओ मेरे को इंडेक्स बताओ कि IDX ये वाला फॉर लूप जब एग्जीक्यूट होगा ना, ये वाला फॉर लूप इनिशियली जब लार्जेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स ढूंढ रहा है, so what will be Sir, 4. Sir, 4. Right. Okay, so it will be 4, right? Yeah, please. Yes, IDX will still stay the 4, right? So I can say this is IDX, right? Because equality case में भी हम change नहीं कर रहे हैं, सिर्फ change कर रहे हैं जब बड़ा number बोल रहा है, right? So yeah, I can say कि same story till I is equals to 3, right? IDX 4 पे भी मतलब नीचे तो कुछ मिला ही नहीं, तो वहां पे तो invalidate होता ही रहेगा, right? So let's continue with the same story from I is equals to 4, right? Okay, so yes, now I can say कि IDX is equal to I, so this will be the case of skip, right? Now after this, I will be incremented and it will be making itself as 5, right? So yeah, I is at 5. Now you can see IDX is not equal to I, right? So yeah, it's basically not satisfying the first if. Now the second if case will be executed, right? So what will happen is now we will be checking 2 into 9 is greater than 9. Yes, this is, because you can see the largest element points to this 4th index and the current element points to this 5th index, right? So these are two different elements. Now this thing can execute, right? But the index initially when in the previous example we had as same. So same index doesn't make any sense to check, right? But even though the numbers are same, but they are at different indexes, so that makes them like two different entities, right? So now I can compare because the largest number is 9. Apart from it, if I have another 9, that is still a contribution to the array, right? So I can check with it. Now what will happen? Okay, so this case is now executed, right? So first thing is this is valid now, right? Let's make the IDX as -1. IDX as -1, right? So IDX को हमने -1 बना दिया. Now after that you can see there is a break statement here. What does break do? It stops the execution of the for loop any further, right? Let's say there is nothing, the for loop will stop its execution. After for loop, what is the next statement that is to be executed? I can say this print statement. Now what will be the answer? It's -1, right? Sir, but break terminates the I mean it's come out of the for loop, then Yes, we get output is IDX is equal to I. How can we print IDX is equal to -1? Because we already come out of from the loop. okay, so you are basically confused with the scope. See, I'm not declaring IDX inside the loop, right? I'm like declaring IDX totally outside of the loop. You can see this part, right? So that basically makes me hold the value. Even if I'm out of loop, I can still have the access to the IDX value, right? So that's the key thing. See, it's a concept of scope, right? Functional scope and the global scope, right? For me, IDX is at a much higher level, right, than the for loop. It's not the part of for loop. अगर for loop में होता, for loop खत्म होने के बाद मैं उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता था, पर IDX for loop के बाहर इनिशियलाइज हुआ तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ, राइट? अंदर भी कर सकता हूँ, बाहर भी कर सकता हूँ, राइट? सो यू कैन सी कि बिफोर, या सर वो लोकल वेरिएबल नहीं है, मतलब वो लोकल वेरिएबल है, वो मेन का लोकल वेरिएबल है, राइट? वो मेन का लोकल वेरिएबल है, वो इस फॉर लूप का लोकल वेरिएबल नहीं है. फॉर लूप को IDX उसके पेरेंट से मिल रहा है, उसका पेरेंट कौन है? मेन फंक्शन, राइट? यस सर, आई अंडरस्टैंड सर. थैंक यू सर. क्या हो रहा है कि इट्स मेन, राइट?
in main function we are having idx, right? Int idx. Now inside the main function we are having the for loop, right? This is the for loop, and after that we are having a print, right? So you can see the for loop and int are at the same level, right? It's not inside for, so I can access this idx on the similar levels, right? Okay, so yeah, diagram ganda ho gaya, but I guess concept samajh aa gaya. Okay, so yeah, still any doubts in this question? Any doubt, any kind of doubt? No sir. Okay. So अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, आरए में कोई दिक्कत नहीं. आई गेस आपको स्कोप का भी बात थोड़ी समझ आ गई होगी, कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, राइट? कोई आरए का कॉन्सेप्ट जो अभी तक नहीं समझ आया हो? हाँ बताओ. Okay, so what is the next problem? I guess reverse number बहुत लोग पूछ रहे थे, right? Right. So let's say कि reverse number क्या दिक्कत दे रहा है? Okay. Okay, so I guess the portal is visible, right? So reverse number is in which assignment? Conditions. 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 We have For loop I guess. Loops I guess. Sorry. Reverse digits of a number, Last. right? तो ये तो कराया था, इसमें क्या नहीं समझ आया? Like which part or which line you are not able to get? Yeah, guys. इसमें क्या नहीं समझ आया बताओ मेरे को, मतलब वहां से पूरा कोड नहीं समझ आया तो वो भी बताओ ना, कोई दिक्कत थोड़ी, समझाएंगे. Okay, the entire code you want discuss, right? How many of you guys are interested in discussing the entire code? Like अगर majority होगी तो discuss करेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं. Already discussed, yeah, I guess no. Clear. ये डाउट किसका है? एक बार वो बंदा अनम्यूट करना यार, किसका डाउट है? Who's out? Abhinav, is it your doubt? Yes sir, मैं सर इसको आज अटेम्प्ट किया था सर, तो थोड़ा प्रॉब्लम आया था, लेकिन सर अभी आपका कोड देखा मैंने, तो मैं इसको एक बार ट्राई करूंगा तो हो जाएगा सर. आपने क्लास अटेंड करी थी जिसमें ये डिस्कस करा था? नहीं सर, वो सर शायद क्लास अटेंड नहीं की थी, इस वजह से सर. चलो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग एक बार देखो, रिकॉर्डिंग देखने के बाद अगर नहीं समझ आता तो उनको मैसेज करना, ठीक है? ठीक है, एक बार. Hello sir. Yes. Sir, in today's assignment of array, so there's a question where it is mentioned that you have to you need to find the maximum value of element where there is no size of array given beforehand, and you will have कौन सा to question use है? some which question you max element. So max element in yeah. array assignment. Yeah, this is the array assignment on the screen, right? So max element, Marcus K equal largest number of divisible pairs, facing this an average calculator, second largest from the array, right? इसमें कोई है नहीं maximum सब वाला. So I'm sending to the discussion. So it is mentioned that you will have to use some other way of reading input values, sir. For array high, how we can take the input other than knowing the value of the size of array?
Okay, so given an array of integers, you need to find its maximum value element, right? The input contains n space separated integers. Okay, so we need an n, right? We need an n. Yes. It is mentioned there is no size of array given beforehand. You will have to use some other way of reading input values. So see, one smart way of like solving this problem is कि आपको constraints दिए, right? 1000 आपको size दिया, so just make an array of right 1000. Let's generalize the answer for the worst case, right? For the worst case, I can have 1000 inputs, right? So let's find out in the 1000 inputs. अगर n की input में नहीं दिया हुआ, so let's find out in the n input. Right, ideally this is the problem of the problem statement, right? I will be like conveying it. Let me just note it down once कि एक तो problem हो गया आपका maximum number, largest number वाला, right? Yes sir. Largest number, and the second is max element. Okay, so yeah, I will be conveying this to the internal team. See, it's basically the problem of key description is not correct, right? The problem description is correct if the code was asked in the modular way, right? कि आपको array पहले से बना के दी हुई है, right? यहाँ पे क्या हो रहा है? हमें कह रहा है array भी बनाओ, right? तो हमें array बनानी तो size चाहिए तो push करना पड़ेगा, right? तो वही है. तो कब तक भी रीड करोगे? अगर मैं लूप भी चलाता हूँ तो इनफाइनाइट लूप थोड़ी चला सकता हूँ. तो यही दिक्कत है. इसमें मॉड्यूलर है तो इसको ठीक कराना पड़ेगा. मैं करा दूंगा. ठीक. ओके सर, थैंक यू सर. और कोई डाउट? एनीवन? आरए असाइनमेंट कल शुरू करेंगे यार. उसकी अभी सर I didn't get your point. Can you tell in English? Okay, yeah, what I was saying ki there is an issue with the problem description, right? The problem description is for the pattern where you have to like follow the modular approach, and the array is pre-made for you guys, right? But as per the portal, if you see, you are like required to write the inputs and outputs, right? For taking any inputs, you need to like either write an array, like let's say you need to take n inputs, right? For that you need a for loop. No, I can't run a for loop of infinite times, right? So it's a problem. There is a problem with the problem description, right? So that needs to be fixed. Okay, this problem statement is valid if the array is pre-made and given to you. Okay, so we have n number of arrays, like n number of elements in the array. That element size is not given to you. You can simply use array.length and get the number of elements, right? So that is one thing. So I will be like conveying it to the internal team and they will be getting it fixed. Okay. So how can we find the second largest element in the array? Okay. So yeah, I guess we will be like discussing it tomorrow. अच्छा कल राखी है, पर राखी में भी इन्होंने क्लास रखी है तो कल आना पड़ेगा. ठीक है, कल छुट्टी नहीं है. Right, so tomorrow also we will be having a doubt class at 10. So yeah, please be there because from tomorrow onwards we will be like starting the array question, right? Okay. सर yes. आप बोल रहे थे कि जावा का सिंटैक्स बताऊंगा स्टार्टिंग से, बेसिक सिंटैक्स. अच्छा सिंटैक्स तो यार सेम यही है यार. सिंटैक्स तो सेम. हाँ यार मेरे सिस्टम पे ना जावा इंस्टॉल्ड नहीं है, तो अगर तुम बोलो कि सिस्टम पे दिखा दूं तो वो थोड़ा सा मेरे लिए पॉइंट इशू में आ जाएगा, राइट? मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि देखो किसी भी लैंग्वेज में ना सबसे ऊपर इंपोर्ट्स होते हैं, उसके बाद फंक्शन होता है. जावा का एक रूल है कि आपने जैसे कोई फाइल नेम बनाई ना main.java, राइट? तो जो पैरेंट फंक्शन आप उसमें बनाओगे ना, पैरेंट क्लास बनाओगे, उसका नेम सेम रखना, राइट? एंड कैपिटल रखना. क्लास का नेम हमेशा कैपिटल होता है. और सर वहाँ मिनिमम होगा, वहाँ main.java में मिनिमम होगा. हाँ, मेन फंक्शन हर लैंग्वेज में ना मेन इसलिए लिखते हैं. आपको मेन का मतलब पता है मेन किस लिए होता है? नो सर. मेन क्या होता है? ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब जैसे C++ की बात करी थी किसी ने, सी में भी हम लिखते हैं इंट मेन लिखते हैं ना, तो यस सर. मेन इज बेसिकली द स्टार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन पॉइंट, राइट? कोड कहीं से तो शुरू होना चाहिए ना एग्जीक्यूट होना, तो कहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा? तो वो मेन से शुरू होता है, राइट? तो इस क्लास का अगर मैं फाइल का नाम मान लो कुछ और रख देता, राइट? जैसे मैं course.java कर देता, यहाँ पे कोर्स क्लास बना देता. कोर्स क्लास के अंदर अगर मेन होता ना, स्टैटिक वॉइड मेन, तो वहां से वो मेन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता कोड में, राइट? तो कोड की जो एंट्री पॉइंट होती है वो हमेशा मेन फंक्शंस होती है. ये बाय डिफॉल्ट सेट है,
ठीक है. So what is difference in 3 import functions? util, lang and io. util, lang and io, अगर आपको इन तीनों के बीच में अगर डिफरेंस देखना है तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि लाइक ट्राई एंड गूगल इट, राइट, बिकॉज इनके अंदर पैकेजेस हैं डिफरेंट. io इज बेसिकली फॉर इनपुट एंड आउटपुट, राइट. आपके कंसोल से आप रीड कर रहे हो, स्कैनर क्लास बना रहे हो, तो ये सारा काम io में, राइट. एंड utility is basically okay. English. No. One more doubt, sir. In that array session, there is some largest number. Can you explain that question? What they said? I didn't get by seeing the input. After seeing the input. Okay. We'll do that. Just give me a second. Okay. So what I was saying, ki util is basically concerned with utility functions, right? Utility functions are pre-made functions that help us to just simple implementation whose internal working we are not considered with. Let's say, for example, math.minimum, right? So yeah, that is a part of utility. And for language, I believe language वाले जैसे भी होते हैं यार वो सारे, right? अगर in depth में difference चाहिए तो वो आप Google कर सकते हो, right? इतना in depth तो Okay, sir. Sir, is a main a reserved keyword? Yes, main is a reserved keyword, right? As I said, main is the entry point for the any programming language. So main is a reserved keyword. Okay. Okay. Yeah. What Dipesh, pyramid problem समझ जा दीजिए sir, please. Pattern case. Pyramid problem. अच्छा एक बार देखिए यार. Okay, so yeah, Jyoti, which problem you were talking about? Largest number. Yeah, that one. This largest number. Yeah. See, in this largest number, we basically need to find the largest possible number that can be formed by any permutation of these numbers, right? So what happens ideally is in this question, we use a string compare, like a sorting with a comparator, or an insertion sort kind of algorithm, right? First, you need to basically convert these elements to a string, right? You can use integer.toString value, and you can then basically get that integer into string. And after that, there is some operation like plus and concatenation that is required. So this is not yet taught to you guys, right? I can like take this question, but this concept is not taught to you, right? So I would highly suggest ki please don't attempt this problem as of now, because I will be talking with the internal team and like getting it removed from the assignment or something, right? Because it uses the concept of sorting, right? So yeah, just don't try and like solve it as of now, right? Please learn sorting once and then you can try and implement it, right? Most probably Adarsh sir will be taking this problem in the main class when he is talking about the insertions. Yeah, okay sir, thanks. Okay, शुभम, पता क्या होता है, जब असाइनमेंट बनती है ना तो वो हर बच्चे के लेवल के लिए देख के बनती है, राइट? तो अब कुछ बच्चे होंगे कि जिनको पहले से कुछ आता, तो उनको भी तो कुछ थ्रिल चाहिए ना लाइफ में, तो उनके लिए ये सब, राइट? तो वही है, जनरली अगर कोई ऐसा इशू आता है तो as a mentor, I can like convey that to the internal team and they will be getting it removed or fixed, right? What I can suggest is what is the correct way of approaching it, right? So just don't worry, just don't get any sort of in panic state, right? We will be doing it once you guys are done with the sorting. Okay. Right. Okay. So yeah, I guess that is pretty much it. I hope I took all your doubts. Now, is there anyone specific I said to ask in last sum of array except self? Sum of array except self. Okay. So let's talk about the sum of array except self. इसकी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ, आंसर नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है? ओके सर, यही बता देते हैं. इसमें बेसिकली तुम्हें सारी गिवन एरे में जितने एलिमेंट्स हैं उनके सम निकालना है एक्सेप्ट सेल्फ के, राइट? और आपको एक एरे प्रिंट करानी है जिसमें ये हो रहा है, जैसे लेट्स से कि गिवन एरे इज 4 3 2 10, राइट? तो इसमें अपने आप को जिस इंडेक्स पे वो हो उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स का अगर सम देखना तो कैसे करोगे? तो लेट्स से कि 4 एलिमेंट के लिए, लाइक एलिमेंट 4 के लिए 3 + 2 is 5, 5 + 10 is 15, right? So apart from 4, the remaining elements were 3 to 10. So I got the answer at 4th position, like for 4, or basically at index 0 has 15, right?
Similarly, for 3, you can see if I remove 3 from the array, what are remaining? 4 plus 2, 6, 6 plus 10, 16. So at the second element, I get God as extremes, right? So अपने आप को छोड़ के बाकी सारे elements का sum होना चाहिए. Okay, sir, got it. Okay? Yes, sir. Yeah. इसको करो, इसको करने के दो तरीके कल डिस्कस करेंगे, right? Okay, sir. Okay, sir. Yeah. Yeah, guys. Any like what I was asking कि anybody else like जिसको मैंने specifically बोला हो last में नहीं? I guess हो गया. Okay. So yeah, that pretty much sums it for today, right? I took all your doubts, basically having a discussion कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बताओ, right? कोई feedback देना तो कुछ बताओ, anything you want to change, you can tell me, right? Right, because consistent feedbacks help me improve and like it will help you like guys understand much better, right? सर पिरामिड वाला एक बार समझा दीजिए सर. पिरामिड वाला क्वेश्चन है कहाँ असाइनमेंट में? मैं वही तो असाइनमेंट का वो नहीं है सर, नोट्स का है सर. सर ने कल समझाया था लेकिन पूरी कंप्लीट नहीं किया था सर ने, थोड़ा स्पीड में पढ़ा दिया था लास्ट में आदर्श सर ने. पिरामिड वाले का लिंक देना जरा आपको डिस्क्रिप्शन में. ओके, सो प्लीज मेक श्योर कि कल भी क्लास होगी, राइट? मिस मत करना. ओके सर. लेकिन सर एक ऐसे सिंपल सा समझा दीजिए जैसे स्टेयरकेस पिरामिड का जो बनाते हैं ना सर. अरे मेरे को क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन तो बताओ, मैं ऐसा हवा में कैसे समझा दूं? ओके, मेरे को एक बार लिंक दे दो आप. एक असाइनमेंट है, मैं एक बार चेक करके जिम पे असाइनमेंट है सर. जिम मैप में मैं चेक कर लेता हूँ सर. उसमें दिया हुआ है स्टेयरकेस का, वो पिरामिड का ही स्टेयरकेस है सर. Yeah, sure. You are saying कि largest number at least जैसे बताया वो बहुत हेल्पफुल था, like dry run. किसकी बात कर रहे हो? कौन सा क्वेश्चन यार, मैं भूल गया. अभी वाला ये एटलीस्ट. अच्छा ठीक है. हाँ भाई, मतलब अगर समझ आ रहा है तो वो बात बढ़िया है, राइट? समझ आना चाहिए. Yes. Yeah, sir, I'm facing recording sections. When I re-seen the recording sessions, when I pass the record, it starts from it's begin the record again. I'll adjust the time when I want to see that same. Okay, so basically when you pause, it basically. Okay, sorry. When I pause it, when I again play that, it strucks. Then I will play the beginning of the video. Okay, so yeah, I guess I conveyed that to the internal team, like the patch manager who is handling this module 1. So he told me that there was an issue with the player. It is fixed now. Please check once and confirm कि अभी भी issue आ रहा है कि नहीं आ रहा. फटाफट करके एक बार check करके बता दो तो मैं बोल पाऊँ. Right. So today happened to me, sir. So many times. Only one record I will pass. I'll write the notes for that. That's why I'll pass so many times. But every time I passed, I come from the beginning of the video. Yeah, that's exactly what I'm saying. Please check now at this current moment. Are you facing the exact same issue? Anybody of you guys can confirm that, so that I am able to basically tell the internal team. Because earlier when I told them, they basically told me yes, there was a problem with the player. Now they have fixed it, right? So if the problem still persists, please give me a validation. Yeah, please convey that to the internal team, right? Because I already did that. एक बार चेक करके मेरे को बता दो. सर जो आपने बोला था कि जब वैल्यू एक्सीड कर जाती है तो वो एरर हैंडलिंग अपने आप करने लग जाता है, तो वो मॉडल से लेता है. तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? उसका सॉल्यूशन ये होगा कि अगर जैसे आप कभी भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस देखोगे ना, तो हमें जब पता होता है ना कि आंसर वैल्यू एक्सीड करेगा, तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो वहां पे होगा डिस्क्रिप्शन में ऐसे दिया होगा, प्लीज रिटर्न द आंसर इन द मॉडुलस ऑफ 1e9 plus 7, राइट? 1e9 plus 7 क्या होता है? 1 9 zeros
sorry 8 zeros followed plus 7, right? 8 zeros plus 7, so एक बहुत बड़ा नंबर होता है जिसका मॉडुलस हम खुद लेने चल रहे हैं, राइट, ताकि कंपाइलर को ना हैंडल करना पड़े ओवरफ्लो, right? So basically that this happens in the case of permutation questions, right, or the multiplication questions where we are like multiplying very large numbers. So in that case, if you like have a look at, let's say, LeetCode or some sort of programming platform where the competitive program is actually done, there you will be finding the questions key, please return the answer in the modulus of 1e9 plus 7, right? So that basically means there is a chance the answer will surpass this limit. So there are specific set way to handle this overflow using the modulus operators, right? There are 4 properties of modulus that are used to basically handle this. Okay. Yes, sir, it's solved, sir. Yeah, right now I checked, it's solved. Thanks. Yeah, so yeah, as I said, I conveyed it, right? So yeah, if you are facing any sort of other issues, please let me know so that I can convey it, right? The issue that you told me, I conveyed it. There is some issue with the layer, and one more thing was let's say this problems that are out of, let's say, key scope, right? So yeah, I guess that's pretty much it for today's class. Let's then just wrap it up, right? So just one more thing. So once this error showed that run line 1 3 killed. So what does that mean? यार ऐसे तो मेरे को एरर याद नहीं है, राइट? तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा दूं? हाँ, एक बार कर लो यार, कर लो. Thank you so much. Yeah, rest of you guys can like leave if you guys don't have anything. Yeah, the class is over. I will be taking this as the last out. Okay. So can you see my screen? Yes, it is visible. Yes, it is. So sir, this is the error that I'm getting. The question is like this name, Ashutosh with his comments. Okay, please show me the code. It says run line number 1. Okay. Hide karo font se dikhao. Okay, so you are basically having n is equals to next int count in int array of size n for int I is equals to I is less than array I next integer if I is equals to 2. System dot print out ln I count plus break. Count plus break. If count is equals to 0, print -1. I guess public static void main public class main. Public class main void main. I guess है तो सब कुछ सही. Infinite loop कहाँ लग रहा है इसका? n है I is equals to 0 से n is this में जा रहा है. So मैं एक बार सबमिट करके देखूं. सबमिट करोगे तो वो कोड फट जाएगा ना कंसोल में. एक बार ट्राई करो. होना तो नहीं चाहिए. Three test cases fail, right? अच्छा, जो टेस्ट केस फेल हो रहे हैं वो एक बार दिखाना. -13 है -1. अच्छा, इसमें मेमोरी लिमिट से कुछ होना नहीं चाहिए. एक बार वो दिखाना क्या मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है. Ashutosh has an array AR of n distinct integers and given array is already sorted in ascending order. He needs to find the maximum. He need to find the maximum index in the array such that the value at the index is equal to the index. It means ARR at I is equals to I, where ARR at I denotes the elements at the ith index. The array may contain negative numbers as well. For example, if in the above example, so the answer is 1, right? Okay. So basically we need to find there is some sort of a number, right? So 10 to the power 9. Okay, so 10 to the power 9, I guess, is fitted in the integer, right? Right, 10 to the power 9, 1e9, हाँ 10 to the power 9 आ जाता है. Constraints output -1 explanation. array बनाई आपने integer n की, आपने scene करा scanner dot next int, right? If array at I is equals to I, right? Print out I. यार कोड तो सही है.
स्कैनर हमने बनाया सिस्टम डॉट इन काउंट 0 8 4 int I is equals to 0 I is less than n I plus राइट। अगर कुछ नहीं होता, अगर कुछ होता भी है तो प्रिंट सीधा आई करना है। एक बार ना मैं इसको देखता हूँ, मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ, मैं आपको ना इसको अगली क्लास में बता दूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको कोड सही है। इसका ना स्नैपशॉट ले लेता हूँ, ठीक है? मैंने इसका स्नैपशॉट लिया है, इसको ना मैं आपको अगली क्लास में कंफर्म कर दूंगा। नाम आंसर, राइट, ठीक है, तो इसको कल मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है? और सर जो वो वाला क्वेश्चन था ना लास्ट टू फिबोनाची, तो इसमें जो इसका आंसर आएगा तो वो जैसे टू डिजिट नंबर ही आएगा, पर जैसे यहाँ पे हमें इनपुट हमें इस एग्जाम्पल 2 में दे रखा है, अगर मैं n to 55 करूँ तो मेरा आंसर बिल्कुल गलत आ रहा है, लेकिन अगर मैं n is equal to 13 करूँ तो मेरा आंसर 33 सही आ रहा है। तो मतलब बात जो वही आपने हो गई बताया ना था कि वही, हाँ यस सर, बात तो वही होगी कि मेन ऑपरेशन तो उतने में ही चल रहा है, उसके बाद अगर आप मॉड्यूलस कर रहे हो तो यहाँ तो आप हर नंबर के बाद मॉड्यूलस करो, उसके कभी एक्सीड ही ना होने दो, राइट? तो अगर 2 नंबर का मॉड्यूलस करके मॉड्यूलस देते हो तो वो स्टिल वैलिड होता है, राइट? तो अगर आप इसको करोगे ना a मॉड्यूलस 100 b मॉड्यूलस 100, राइट? तो a आप एक बार काम करो, c इज इक्वल्स टू a मॉड्यूलस 100, यहाँ पे नहीं ऊपर जहाँ पे c में आप लिख रहे हो ना वैल्यूज, सी तो वैल्यूज यहाँ पे लिख रहे हैं, हाँ, a मॉड्यूलस 100 प्लस b मॉड्यूलस 100 होल ब्रैकेट मॉड्यूलस 100 होल ब्रैकेट मॉड्यूलस 100, राइट? आई गेस एक बार इसको आप चेक करो, चलना चाहिए। हाँ सर, चला, सबमिट करो इसको। अभी भी 2 टेस्ट केसेस फेल। कौन सा फेल हुआ देखना, बहुत बड़ा नंबर है क्या? ये तो 9 नहीं तो सब ठीक है। 3 में तो फिर सही चलना चाहिए। 3 में तो 3 में क्या होता है नंबर? 0 1 1 सर एक्चुअली इसमें 3 सर एक्चुअली सर सिंगल डिजिट के लिए ना सर उसके लिए एक्सप्लिसिटली कोड लिखना होगा 0 and 3, सर वो एक अलग से कोड लिखना होगा। इफ द नंबर इज सिंगल डिजिट देन SOP ऑफ फिलिंग 0 प्लस दैट नंबर, तब जाके ये सबमिट हो जाएगा। अच्छा, मतलब वो 0 में लिखना होगा, 0 प्लस 03 लिखना होगा, 03 09 08 वैसे मेंशन है क्वेश्चन में। अच्छा, हाँ तो फिर वही है, बड़े नंबर्स के लिए तो होगा। मैंने प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन नहीं देखी ना। हाँ जी, हमने मॉड्यूलस लगाया ना, ये मॉड्यूलस की बेसिकली एडिशन प्रॉपर्टी होती है, राइट? तो ये भी जब आप आगे लाइक आई गेस मॉड्यूल 2 या मॉड्यूल 3 में जब मॉड्यूलस वगैरह के अच्छे क्वेश्चंस करोगे ना, तब भी ये काम होगा, मॉड्यूलस की मल्टीप्लिकेटिव सब्सट्रैक्शन और एडिशन प्रॉपर्टीज, ठीक है? यस, नो वरीज, ठीक है? तो फिर आज के लिए रैप अप करते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है? आपको मैं उसका डाउट शायद कल देख के बता, ठीक है? या ऑलराइट गाइस, सर गुड नाइट सर, गुड नाइट।